Hello everyone, good evening. So actually in the daytime I could not manage to come because of a meeting, but it's okay. Without delay, let's start the class. You can see that in the last class we discussed about the A-star algorithm. Now let's come to hill climbing technique. I hope the A-star algorithm and A-star algorithm you have got the concept. So that is very important because A-star algorithm you know that multiplication of best first search algorithm, and A-star where we use an or graph. But I didn't. In the last class, I gave you one assignment, but I did not get it yet. Please do it. Okay, that will clear your concept. I hope I can see your assignment by tomorrow. So let's start hill climbing techniques. हिल क्लाइंबिंग नाम से ही समझ में आ रहा है हिल क्लाइंब से एसोसिएट और हिल क्लाइंब से एक मतलब जुड़ा हुआ चीज है जुड़ा हुआ टेक्निक है जब हम हिल क्लाइंब करते हैं क्या कैसे करते हैं we just try to catch one hill and try to means catch another hill that way means we try to climb. Okay, so in hill climbing what happens, we always try to find and catch one particular hill. एंड ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपने एक पर्टिकुलर हिल पकड़ के जाम करके दूसरा वाला हिल पकड़ोगे, ऐसा नहीं है. दिस इज लाइक नियर बाय हिल्स, so that's why we can call it local, right? सो इसी चीज को उन्होंने मतलब कॉन्सेप्ट को हमने जब टेक्निक में लाया, सर्च टेक्निक्स में लाया, तब हम इसको बोलते हैं हिल क्लाइंबिंग टेक्निक्स. ओके, so hill climbing algorithm is a local search algorithm. Now you got it why we call it as a local search algorithm, right? Which continuously moves in the direction of increasing elevation or value to find the peak of the mountain or best solution to the problem. ठीक है. तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक हिल के साथ दूसरा वाला हिल कैच करते हैं अकॉर्डिंगली. तो हम क्या करते हैं, उसको क्लाइंब करते हुए पिक तक पहुंचते हैं. Right. So it terminates when it reaches a peak value where no neighbor has a higher value. जब हम पीक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, और कोई भी नाइबर वैल्यू इससे ऊपर तो नहीं हो सकता. तो दैट मीन्स वी स्टॉप द सर्च. सो नाम जो हिल क्लाइंबिंग टेक्निक है इसी से आया है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक. एंड दिस हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम इज यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. Okay, one of the widely discussed examples of hill climbing algorithm is the traveling salesman problem, in which we need to minimize the distance traveled by the salesman. You can recall the traveling salesman problem that we discussed already. ठीक है. तो जैसे सपोज आप जोरहाट से हैं और you need to go to say Gulaghat, say Tiok and different other places for selling, right? तो हमें ऐसे डिस्टेंस को ट्रेवल करना है ताकि हम हमारा जो पूरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस वो मिनिमाइज हो, राइट, कम कॉस्ट लगे. जैसे आप ट्योक की ओर जा रहे हो तो आप आपको जो रास्ते के बीच में पड़ेगा, जैसे कि लाइक जिस्ट, JIST, जिस्ट. सो यू विल मीन्स कंप्लीट योर असाइनमेंट एट जिस्ट एंड देन यू गो टू ट्योक. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस तक गया उसके बाद फिर से आप गोलाघाट गया और फिर से आप ट्योक गया. तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल नॉट बी actually supported, right? Will not be means done by the traveling salesman. So that's why in the traveling salesman we always try to minimize the distance. और hill climbing algorithm एक ऐसा ही टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करते हैं. और इसको हम बोलते हैं ग्रीडी लोकल सर्च, as it only looks to its good immediate neighbor state, not beyond that. तो हम हमेशा जो लोकल बेस्ट सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करते हैं, जो लोकल और इमीडिएट नाइबर गुड नाइबर स्टेट है उसको फाइंड आउट करते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट. तो इसलिए हम बोलते हैं ग्रीडी लोकल सर्च. ग्रीडी पहले भी मैंने बताया था, बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइड विथ इज करंट स्टेट, इट ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड बेटर एंड बेटर. दैट्स व्हाई ये ग्रीडी है, ग्रीडी लोकल सर्च. Right. Now, a node of a hill climbing algorithm has two components, which is state and value. And this is
मोस्टली यूज व्हेन ए गुड ह्यूरिस्टिक इज अवेलेबल। ह्यूरिस्टिक क्या है, मैं पहले भी समझाया था। ह्यूरिस्टिक फंक्शन जिसके थ्रू हम एक अनुमान करते हैं, एक एक वैल्यू जो प्रोबेबल कॉस्ट है फ्रॉम योर करंट सेट टू रीच द गोल। ठीक है। And in this algorithm, we don't need to maintain and handle the search tree or graph as it only keeps a single current state. So these are the points. Now, if you recall the traveling salesman problem, ठीक है, तो ये एक important problem है। Like I said, in this algorithm, the objective is to find a low-cost tour that starts from a city and visit all the cities en route exactly once and ends at the same starting city. मतलब जोरहाट से जाके आप फिर से जोरहाट वापस आओगे। जोरहाट से जिस से गोलाघाट नहीं जाओगे, राइट। एक जगह को एक ही बार विजिट करके वो वापस आप आओगे। So this is the algorithm. Start, find out all n minus 1 factorial possible solution where n is the total number of cities. ठीक है। I think I don't need to discuss about n minus 1 factorial because you guys are from the mathematics department, so you know what does it mean by factorial, right? आप लोगों को permutation combination आता है, I hope so. Yes. So determine the minimum cost by finding out the cost of each of this n minus 1 factorial solution. And finally, we keep the one with the minimum cost and n. This is the algorithm. And if you want to do some numerical, आप इसका screenshot ले सकते हो. You please take a screenshot of this. So say this is the traveling salesman problem. You can see total distance cover here 37 किलोमीटर and total distance 31 किलोमीटर। तो हम मिनिमाइज करना है, से 1 से स्टार्ट करके आप जा रहे हो, ठीक है। तो मतलब कैसे आप वो कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए सारे नोड्स को कवर करोगे, यही होता है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसके लिए हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स लेते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज 1 2 3 4। सो 1 to 1 डिस्टेंस क्या होगा, 0। 1 to 2 डिस्टेंस क्या होगा, 4। 1 to 3 डिस्टेंस होगा 1। 1 to 4 डिस्टेंस होगा आपका, yes, given is 3। Similarly, 2 to 1, that is 4, 2 to 2, obviously 0, 2 to 3, that is 2, and 2 to 4, that is 1। Similarly, 3 4 इन सब का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो आपके लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। यू ट्राई टू सॉल्व दिस, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। वेरी इजी है, आपको मिनिमम कॉस्ट वाला रूट निकालना है, ठीक है। आई होप यू कैन डू इट, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आई होप यू कैन सॉल्व इट, राइट। दिस इज द, কপিতে কৰিলে হ'বনে? हाँ हाँ। কপিতে কৰিলে হ'বনে? অ কপিতে কৰিবা, এইখিনি জাষ্ট তোমালোকৰ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে দিছো। কিন্তু লাষ্ট ক্লাছত মই তোমালোকৰ ইয়ৰ এলগৰিথম আই ডিছকাছ, বাট আই অলছ' ইনফৰ্ম ইউ টু ৰাইট দ্য এলগৰিথম, বাট ইউ none of you have done it. Please do it, okay? ওকে স্যার। And our graph is very important. Okay, now features of hill climbing. There are some main features of hill climbing। क्या करते हैं हम, मैंने बोला ना, एक पत्थर पकड़ के दूसरा पत्थर हम ढूंढते हैं, राइट। सिमिलरली वही वही आप एनालॉजी लेके यहाँ पे सोच सकते हो। जनरेट एंड टेस्ट वेरिएंट मीन हिल क्लाइंबिंग इज द वेरिएंट ऑफ जनरेट एंड टेस्ट मेथड। मतलब जनरेट करेंगे नोट, उसके बाद चेक करेंगे कि यह सही है या नहीं। सो the generate and test method produce feedback which helps to decide which direction to move in the search space। देन दिस इज ए ग्रीडी अप्रोच, लालची है ऑब्वियसली, मैंने बोला ना आपको, आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो, आपको और अच्छा चाहिए, राइट। सो दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज इन कंप्यूटर साइंस वी कॉल इट एज greedy approach। Hill climbing algorithm search moves in the direction which optimizes the cost। cost जहां पे optimize होगा उसी ओर हम चलेंगे, but no backtracking। It does not backtrack the search space as it does not remember the previous। ये याद रखना, यहाँ पे बैक ट्रैकिंग नहीं होता है। एमसीक्यू आ सकता है, हिल क्लाइंबिंग में बैक ट्रैकिंग अलाउ है या नहीं। सो इन हिल क्लाइंबिंग नो बैक ट्रैकिंग, क्योंकि ये जो करंट स्टेट है उसी से काम करते हैं, वो प्रीवियस स्टेज को भूल जाता है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
So, state space diagram for hill climbing. The state space landscape is a graphical representation of the hill climbing algorithm that is showing a graph between various states of algorithm. ये ग्राफ है, x axis में हमने क्या लिया है? We have taken a function which can be an objective function or cost function. या हम cost function लेते हैं, ठीक है? And y axis में जो particular cost है वो लिया है. तो देखो ये है, ओके, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये आपका स्टेट स्पेस में कारण कौन कौन सा स्टेट है, मतलब ये कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं और ये कहाँ कहाँ स्टेट है, स्टेट वन, स्टेट टू, स्टेट थ्री, लाइक दैट. ओके. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिल क्लाइंबिंग से रिलेटेड, दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग अप्रोचेस, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो इसके लिए आपको ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करना पड़ेगा. इसमें वेरियस टर्म्स हैं, विल डिस्कस. So, as I said, different regions in the state space landscape. Local maximum is a state which is better than its neighbor states. इस local maximum बा local minimum हम बोलते हैं ना, आप लोगों को याद होगा कि हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, डिराइवेटिव निकालते हैं, उससे फाइंड आउट करते हैं. ये आई होप यू गाइस नो अबाउट द मैक्सिमा, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम मिनिमा. यस. यस सर। वेरी गुड. सो दैट द सेम कॉन्सेप्ट हियर. हाँ, यहाँ पे भी वही मैक्सिमा एंड मिनिमम निकालते हैं. So local maxima is a state which is better than its neighbor states, but there is also another state that is higher than it. Local maximum हम current particular neighboring के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. हो सकता है उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू मिले उससे ज्यादा बड़ा, ठीक है? That is global maximum. Global maximum is the best possible state of the state space landscape. So this is the highest value of the objective function. Current state where the agent is currently present, and flat local maximum means a flat space where all the neighbor states of the current set have the same value. जब सारे वैल्यू सेम जैसा हो जाएगा उसको बोलते हैं flat local maximum. And shoulder is a plateau region which has an uphill edge. So ये ग्लोबल मैक्सिमा है जो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा वैल्यू, बड़ा वैल्यू है इसमें. यू कैन सी द हाईएस्ट वैल्यू हियर. दिस इज द शोल्डर रीजन and this is the local maximum and this is the flat local maximum. Why? All the values in this particular means location will be having the same value. Now, there are different types of hill climbing algorithm like simple hill climbing, steepest ascent hill climbing, and stochastic hill climbing approach. Simple जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? Simple hill climbing is the simplest way to implement a hill climbing algorithm. It only evaluates the neighbor node state at a time and select the first one which optimizes the current cost and set it as the current state. It only checks its one successor state, and if it finds better than the current state, then move else इन द स्टेम. तो एक ही स्टेट चेक करते, वो बेटर होगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो जिस स्टेट में है उसी में रहेगा. तो इसका फीचर्स है कि दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड दिस इज लेस ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज नॉट गारंटेड ऑफ कोर्स. तो एटलीस्ट सिंपल हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिथम आपको आना चाहिए. बाकी जैसे स्टीपेस्ट और स्टोकेस्टिक नहीं भी आए तो बट सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम यू शुड नो. Step one, evaluate the initial state. If it is a goal, then we have to stop or say success and stop. Step two, तो अगर ये नहीं हुआ तो step two में आएंगे. Loop until a solution is found or there is no new operator left to apply. याद करो ए स्टार में जैसे मैंने पढ़ाया था. तो हम कोशिश करते रहेंगे नया सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, राइट? एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन वी हैव ऑपरेटर्स लेफ्ट. ऑपरेटर अप्लाई करके ही तो हम जनरेट कर रहे हैं ना, टेस्ट एंड जनरेट. अगर कोई ऑपरेटर नहीं रहेगा then this means that we cannot go ahead. Step 3, select and apply an operator to the current set. I hope you guys know what is operator. You can recall the Python class. Operator हम देते हैं, उससे कुछ ऑपरेशन होता है, तभी जाके नया चीज क्रिएट होता है. That's it. So step 4, check new state if it is a goal set. So नया state हमें मिला because of the application of the operator. Then we will check if it is a goal state, then return success and quit. Else, if it is better than the current state, then assign new state as a current state. अगर ये current state से better है तो new state हम क्या कर रहे हैं? assign new state as a current state. जो नया state है उसी को current state बनाएंगे और ये आगे बढ़ते रहेगा. अगर ऐसा नहीं हुआ, नहीं मिला, तो else if not better than the current state, then return to the step 2.
मतलब आप भी फिर से नया स्टेट जनरेट करेंगे। ठीक है, ये चलता रहेगा। स्टेप 5 एग्जिस्ट। Then steepest ascent hill climbing. I told you that at least you should know the simple hill climbing. These are the just variants. Steepest ascent hill climbing is a variation of this simple one. It examines all the neighboring nodes of the current set, not only one. Hill climbing, simple hill climbing में एक देखते थे या सब देखते हैं, and select one neighbor node which is closest to the goal state. बट ये ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड समझ में नहीं आए तो मुझे पूछना, क्योंकि ये सेम है जैसा मतलब मैंने पढ़ाया था ए स्टार के लिए। इसमें कोई समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क। देन स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग, बस वेरिएंट समझ में आना चाहिए। सिंपल हिल क्लाइंबिंग एक 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 नोट देख रहे हैं। ठीक है, स्टीपेस्ट ascent में सारे नोट्स को देख रहे हैं। ठीक है, देन स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग does not examine for all its neighbors. Rather, this algorithm selects one neighbor node at random and decide whether to choose it as a current state or examine another state. अब यहाँ पे randomness की बात आई। सिंपल हिल क्लाइंबिंग में हम एक देख के जाते थे, स्टीपेस्ट ascent में सारे नोड्स। अब स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग सिंपल जैसा है, बट वी select a node, right, randomly. Okay, not decidedly. It is selected on the basis of randomness, right? Up. What are the problems we have in hill climbing? You can put star mark here. This is very important question and maximum time asked in the competitive exams. There are three major problems in the hill climbing methods. First one is local maximum. दिखाई दे रहा है, you can see the graph. Local maxima is a peak state, अभी बताया था मैंने। ठीक है, which is better than each of its neighboring state. But क्या हो सकता है, there may be another state present which is higher than the local maxima. हमने सामने बड़ा देख के हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, बट हो सकता है कि आपको उससे आगे और उससे भी ज्यादा बड़ा एक मैक्सिमम मिल जाए। राइट, सो लोकल मैक्सिमा इज द प्रॉब्लम हियर। हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? बैक ट्रैकिंग, क्योंकि आपको पता है हिल क्लाइंबिंग में बैक ट्रैकिंग अलाउ नहीं है, बट लोकल मैक्सिमम जैसा प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए बैक ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड। Backtracking can be a solution, right? Create a list of all the promising paths so that algorithm can backtrack the search space and explore other part as well. एक रास्ते से गया, देखा उसमें सही नहीं आ रहा है, वापस आया, फिर से दूसरा रास्ता चेक किया, like that. This is backtracking. Backtracking is needed. Then plateau. Plateau means is a flat area in which all the neighbor states of the current set contains the same value. Because of this, algorithm does not find any base direction to move. मतलब सारे values एक जैसा है, तो वो किस साइड जाएगा? So a hill climbing stars might be lost in the plateau area. ये दिखाई दे रहा है, this is the graph. इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए you have to draw this diagram. You have to draw east of the diagram. Now, what will be the probable solution? Solution is to take big steps or little step while searching to solve the problem. मतलब या तो आप एकदम बड़ा स्टेप लेके सारे जितना भी सेम जैसा वैल्यू मिल रहा है उसको क्रॉस करते हुए चले जाओ, या तो स्मॉल स्टेप लो। ठीक है, so randomly select a state which is far away from the current state, so it is possible that the algorithm could find non-plateau region. ये एक प्रोबेबल सॉल्यूशन है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि इससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन रीचेस, ये सब टर्म्स आपको दिखाई दे रहा है, these are the terms that we are taking from geography, right? A ridge is a special form of local maximum. It has an area which is higher than its surrounding area, but itself has a slope and cannot be reached in a single move. तो ये क्या है, रिच एक ऐसा एरिया है जिसको सराउंडिंग एरिया से हायर है, बट इसका खुद का एक स्लोप है, राइट? तो जो सराउंडिंग एरिया है उसमें भी आपका स्लोप्स है, ये दिखाई दे रहा है, यू कैन सी हियर दिस इज स्लोप, दिस इज स्लोप। तो ऐसी जगह पे, ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्पेस और स्टेट स्पेस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव, क्या हर जगह पे आपका क्या है, स्लोप है। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? वी यूज बाई डायरेक्शनल स्टार्स। ये भी एक प्रोबेबल सॉल्यूशन है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट कंफर्म दैट यू विल गेट द सॉल्यूशन। मतलब आप इस ओर भी जा रहे हो और इस ओर भी जा रहे हो, या मल्टी डायरेक्शनल, सॉरी, दिस डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन यू विल सर्च। इफ
any direction you find that there is no such ridges exist, or then you will select that particular direction. Okay, so with the use of bidirectional search or moving in a different direction, we can improve this problem. So now I hope you are well aware with the different problems. First, we discussed local maxima, solution of it, then plateau, solution of it, and the ridges, solution of it. Now, simulated annealing. A hill climbing algorithm never makes a move towards a lower value current to be incomplete because it can get stuck into a local maximum. And if algorithm applies a random walk by moving a successor, then it may complete but not efficient. So simulated annealing is a means algorithm which yields both efficiency and completeness. But आपके syllabus में ये नहीं है. You can consider simulated annealing as a extended part of hill climbing algorithm. ठीक है, तो मैं I don't think that I need to discuss because आप लोग खुद confused हो जाओगे. बस you can note it down, simulated annealing. No one asks about this, but this may be a solution of hill climbing algorithm. ठीक है. So I hope this is sufficient for today. जितना पढ़ा है वो पढ़ लो. In the daytime I could not take the class because I was very busy today because of a lot of activities actually going on. So I think that you should not miss it. That's why I have discussed. Everything is clear, right? Yes, sir. Okay, then তোমালোকে চাই ল'বা এবাৰ আকৌ মানে যিমানখিনি যদি কিবা প্ৰব্লেম হয়, if you face any problem, I will share the this one also, means this recorded video also. So go through it. If you have any problem, I will discuss. Tomorrow again, I will take one class, but that will be truly programming, means data science class. So be ready for that also. Okay? Okay, sir. Okay. Thank you. Good Sir, night. কাইলৈ অনলাইন ল'ব নে ক্লাছত ল'ব? মই ক্লাছতো ল'ব পাৰোঁ, অনলাইনতো ল'ব পাৰোঁ. যদি ক্লাছত মই কাইলৈ সময় পাই যাওঁ, তেনেহ'লে মই ক্লাছলৈ গুচি আহিম. যদি ইন কেছ মই মানে সময় নাপাওঁ, তেনেহ'লে মই অনলাইনো ল'ব পাৰোঁ. So I cannot say now, but I will try to come to the classes. The most preferred means will be the classroom. But if I could not manage, then I will take online. ठीक है? Okay, sir. Okay, thank you. And one more thing, yeah, the scepter, this one I have, I told you now, I have sent for the first group, and the second one, I'm working on that. Very soon, we'll complete and we'll send that one out. But a task for you that every day at least you go through it, try to improvise it, include some diagrams, right? तो समझ मतलब उसको बार बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि कैसे हमने लिखा है और उसको आप कैसे बेटर बना सकते हो. ठीक है? Don't leave it, huh? Machi and other groups, so me and Umimala. Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, इसको सीरियसली लो क्योंकि जहां हमने भेजा है ना वो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा पब्लिशर है. इसमें हो गया तो मान लो आप लोगों का स्कोपस इंडेक्स वाला पब्लिकेशन हो जाएगा. तो प्लीज. Okay, थैंक यू. sir. Sir, আমি চেপ্টাৰ কেইটা Thank you, sir. কেনেকে ল'ম हाँ हाँ, নেকি? কি আছে? Sir, চেপ্টাৰ কেইটা মানে কেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ অলপ দেখুৱাই দিব লাগিব এইকেইটা অলপ. তোমালোকৰটো মই বনাই আছো আচলতে. এতিয়া মই নিজে বনাই আছো, সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে. মই বনাই পেলাই, কাৰণ তোমালোকৰটো এইটো প্ৰথম ৱৰ্ক হয়, চ' মই তোমালোকক দিয়া হেৰি নকৰোঁ. খালি বনাই লোৱাৰ পাছত মই তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম. তোমালোকে সেইটোক ইম্প্ৰভাইজ কৰিব লাগিব. Okay, sir. আৰু কিবা বুজি নাপালে মোক ডাইৰেক্ট সুধিব লাগিব. ঠিক আছে? ঠিক Okay, আছে, sir. sir. Okay, good night. Good night, sir. Thank you, sir. Thank Good you. night. Bye-bye.